While the state of Tamil Nadu is still recovering from the devastating aftermath of Cyclone Michaung and the following floods, volunteers from Bengaluru extended a helping hand to bring essential supplies to stranded Tuticorin families. The floods had left many families stranded, submerged their homes, and damaged properties. Amidst this tragedy, Active Bangalore, an NGO in the city, took the initiative to provide essential supplies to the people of Tuticorin. Active Bangalore collaborated with several NGOs in the city like Milli Council, Charitable Trust, Project Smile, Beyond Boundaries, Be Charitable Trust, and also the local residents of Tuticorin to ensure the supply of essential materials. It started when one of the residents of Bengaluru, hailing from Tuticorin, informed a volunteer about the situation in his hometown. The volunteers collected 650 kgs of rice, 2,400 liters of water, 420 liters of milk, 50 blankets, 500 pairs of clothes, 4,800 biscuit packets, 10 boxes of cakes, along with a few more clothes for men and women. Tausif Ahmed, Saifuddin Sabir Mohammed, Samir Barde, and Mohammad Mehraj were the 4 volunteers who took the relief material from Bengaluru to Tuticorin on December 22nd. From there, the local residents are ensuring that the relief reaches the remotest areas in the city. Tamil Nadu continues to expect heavy rainfall until December 28, and Tuticorin district has already recorded 22 fatalities. Amidst this, the relief materials by NGOs provide some help to the citizens as they try to return to normalcy. Assalamu alaikum everyone. As you all know, there are floods in Tamil Nadu. So we from Active Bangalore and the association of a few NGOs of Bangalore have decided to send the relief material to Tuticorin. So here I have my friend who will be giving a brief about the items which we will be sending to Tuticorin. So here he is. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So from all the NGOs of Bangalore, what we have collected and what we will be sending is 2,500 liters of water bottle, 4,800 biscuit packets, 420 liters of milk, 650 kgs of rice, 120 liters of oil, 500 pairs of clothes, 50 blankets, 30 nighties, 300 dungis, 15 ration kits, and 10 boxes of cakes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हाल में सदरन तमिलनाडु में जो फ्लड्स आए हैं, तूफ़ान की सूरत हाल पैदा हुई है। ख़ास तौर पर ट्यूटिकोरिन और उसके आसपास के इलाक़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और वहाँ के लोग बहुत परेशानी में हैं। गांव-गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से खाने का और लोगों की जो है क़ियाम वगैरह के सिलसिले में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर के मुसलमानों की तरफ से ख़ास तौर पर एक्टिव बेंगलोर, जिसमें ऑल इंडिया मिली काउंसिल, बियॉन्ड बाउंड्रीज, प्रोजेक्ट स्माइल और नवायत क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हैं, इनकी तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ क्या कुछ सामान पहले मरहले में जा रहा है। इंशाल्लाह और भी इस पर काम होगा। ये ज़रूरतमंदों को वहाँ पहुँचाया जाएगा। तूतुकुड़ी या ट्यूटिकोरिन जिसे कहा जाता है, उस इलाके में हमारी तरफ से ये रिलीफ जा रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद जो है और काम इस सिलसिले में किया जाएगा। Subscribe to Daily Salah Digital for more such updates.